Good morning, good morning, friend. Welcome to back my channel. Today we will discuss on IC engine for the trade paper, heat engine or the ALP CVD2. So basically in that four chapter basically we will see here. First one is the heat engine. First one is the IC engine. Second one is the normal fitting and welding, and last one is sheet metal. And after that some basic electricity question. In IC engine, first we'll see introduction of IC engine, parts of IC engine, classification of IC engine, some important terms of IC engine. अभी नहीं Some important terms used in IC engine, performance parameter of IC engine, valve timing diagram for both engine, supercharger and turbocharger. Basically, this one is the important function of carburetor, lubricating system of IC engine, and cooling system of IC engine. Detonation and knocking, rating of IC engine and CI engine fuels, basically second number and octane number is there. So testing of IC engine and transmission system, basically in which you will see that engine, the clutch, gearbox, and propeller shaft. So this kind of thing that we will see there from introduction. Internal combustion engine is Internal combustion engine is a type of heat engine. Basically, it is a heat engine where the combustion of fuel occurs inside the engine cylinder. The energy released from the fuel is directly used to produce the mechanical work, and these engines are widely used in automobile, locomotive, aircraft, and power generation due to their the compact size, efficiency, and the high power to weight ratio. इसमें बेसिकली जो है इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोकोमोटिव एयरक्राफ्ट एंड पावर जनरेशन सेक्टर में करता क्या है हीट इंजन वेयर द कंबशन ऑफ फ्यूल अकर्स इनसाइड द इंजन इंजन के अंदर में क्या होता है करता है कंबशन फ्यूल्स का और उसके बाद वो क्या करता है द एनर्जी रिलीज फॉर द फ्यूल इज डायरेक्टली यूज टू प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क जो एनर्जी वहां से मिला उसको मैकेनिकल वर्क में काम करता है ये कन्वर्ट करने के लिए स्पेशल फीचर्स ऑफ आईसी इंजन बेसिकली आईसी इंजन क्या है एक ऐसा इंजन है जो कि कंबशन हो गया फ्यूल्स का फिर उस एनर्जी जो बना वो एनर्जी डायरेक्टली काम क्या करेगा मैकेनिकल वर्क करेगा कुछ बस इतना ही है यहाँ पे
इसका यूज होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, लोकोमोटिव, एयरक्राफ्ट, ये सारे सेक्टर में हम इसको यूज करते हैं। स्पेशल फीचर्स क्या है? इंटरनल कंबशन इंजन, कंबशन ऑफ एयर कूल्ड मिक्सचर हैपेंस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ये क्या होता है? अंदर होता है, इनसाइड द सिलेंडर में होता है। कंबशन ऑफ द एयर फ्यूल जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? हैपेन इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ये यहाँ पे ये बर्निंग होता है। उसके बाद डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन, अभी तो कन्वर्ट केमिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। सही बात है, कंबशन होगा, वो एनर्जी कहाँ पे चला गया? मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगा? रोटेट वगैरह करेगा और सारा काम करेगा। कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट कंपेयर टू द एक्सटर्नल कंबशन इंजन। क्या होता है? एक्सटर्नल कॉम्पैक्ट होता है, लाइट वेट भी होता है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो होता है उसका वेट और वो कॉम्पैक्टनेस थोड़ा उस तरह का नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, वेट उसका बहुत ज़्यादा होता है। हाई इफिशिएंसी, इफिशिएंसी भी इसका ज़्यादा होगा। ऑपरेट्स एट हायर इफिशिएंसी ड्यू टू द डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन। यहाँ पे एनर्जी लॉस बहुत कम होता है, इसलिए एनर्जी डायरेक्ट कन्वर्ज होता है कंबशन इनसाइड द सिलेंडर रखकर, और वो मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम इफिशिएंसी हमको मिलता है, जो कि फार्मूला ऑफ एफिशिएंसी होता है जो वर्क आउटपुट हुआ अपन वर्क इनपुट हुआ। तो आईसी इंजन वर्क बेस्ड ऑन द थर्मोडायनामिक्स एलिमेंट, कॉमनली द ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल बेसिकली पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल होता है। डीजल इंजन डीजल साइकिल पर चलता है। चलो ठीक है। द प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेज, कुछ प्रोसेस होता है, दैट वी विल सी द प्रोसेस। फर्स्ट वन क्या होगा इसमें? एयर और फ्यूल मिक्सचर जो है वो इनसाइड द सिलेंडर आएगा, इनटेक होगा वहाँ पे। दूसरा बात क्या होगा? पिस्टन जो है कंप्रेस करेगा, पिस्टन जो है कंप्रेस करेगा एयर फ्यूल मिक्सचर को एंड इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर। जिससे क्या होगा? प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा? वो इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप होगा पावर, पावर स्ट्रोक होगा, जो कि कंबशन अकर्स व्हेन द मिक्सचर इज इग्नाइटेड कॉजिंग एन एक्सप्लोजन एंड दैट द पुशेस द पिस्टन डाउन। अब यहाँ से पिस्टन क्या करेगा? डाउन करेगा, और यहाँ से सीधा ये यहाँ पे क्या होगा? कम्बशन अगर करेगा, क्योंकि वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वगैरह। अब यहाँ से कम्बशन होगा, वो एएलपी जो भी मिक्सचर आएगा वो। उसके बाद एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट गैसेस आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिलेंडर, और लास्ट में क्या होगा? एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से निकल जाएगा, एग्जॉस्ट स्टॉक होगा ये। एडवांटेज ऑफ आईसी इंजन, अब इसका एडवांटेज क्या? व्हाट आर द बेसिकली एडवांटेज ऑफ आईसी इंजन? कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट डिजाइन, तो सही बात है। जो वी आर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इसके साथ क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा, लाइट वेट होगा। चलो ठीक है। High thermal efficiency, we will see the efficiency is also there, that you will get that higher efficiency as compared to that external combustion what engines. उसके बाद है क्विक स्टार्ट एंड स्टॉप कैपेबिलिटी, ये जल्दी स्टार्ट होगा और रोका भी जा सकता है। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, इसका रेंज हो बहुत ज़्यादा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में, लोकोमोटिव, एयरक्राफ्ट, these are the basically sectors that we can use IC engines. Disadvantage क्या होता है? There are some disadvantages of IC engine, that you will see that emission, that the harmful emission they are taking place. The CO, that you will see that carbon monoxide, carbon dioxide, and nitrogen dioxide, carbon dioxide. These are the basically harmful emission that there was taking place. So लिमिटेड फ्यूल ऑप्शन है, और टिपिकली पेट्रोल और डीजल है। ये हाँ एक चीज कंडीशन यहाँ पे होगा, बस ये डीजल और पेट्रोल पर ही बेसिकली बेस्ड होगा। तो ये लिमिटेड फ्यूल ऑप्शन है। और इफिशियंसी डिक्रीजेज एट हायर एल्टीट्यूड, इसका इफिशियंसी भी डिक्रीज कर देगा हायर एल्टीट्यूड पे। अब बात हम करते हैं पेट्रोल इंजन, बेसिकली ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। सो दीज आर द बेसिकली लिटिल बिट सिंपल पॉइंट दैट वी कैन सी। So these are basically not, I think, difficult one that we will discuss more and more here. So now we'll move to diesel cycle, auto cycle, and dual cycle. So basically, the efficiency you will see that diesel cycle, then dual cycle, then efficiency is the compression ratio is the diesel cycle, dual cycle, and auto cycle. These are basically what the ratio. They are the increasing order of what they are the efficiency, and they are the compression ratio. So in petrol engine, you will see that auto cycle, that basic thermodynamics that you will see here. Heat engine, those engine which work on the heat or the temperature and called the heat engine. ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए और सिंक का टेम्परेचर कम होना चाहिए। यहाँ से क्या होगा? हीट इंजन है, मेरा हीट इंजन वर्क कर रहा है हाई टेम्परेचर से,
हाई टेम्परेचर से हीट आया यहाँ पे हीट इंजन कुछ हुआ किया, देयर इज लॉस। उसके बाद ये T2 टेम्परेचर है, जो इसका टेम्परेचर लेस होगा देन द सोर्स टेम्परेचर। एफिशिएंसी वी विल डिफाइन आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट जो हमें यहाँ मिल रहा है वो माइनस मिलेगा, क्या चीज माइनस है, Q1 ग्रेटर देन Q2 बिकॉज द T1 ग्रेटर देन T2, so Q1 greater than Q2, then Q1 minus Q2, and what is the input Q1? So Q1 minus Q2 upon Q1. So now the efficiency is equal to 1 minus Q2 upon Q1. So basically efficiency is laws of thermodynamics basically work here. The zeroth some thermodynamic law you will see that what exactly is zeroth law. Zeroth law is a temperature A and B of a body is same, B and C is same. So basically AC also will be the same. So these are the temperature of AC will be the same. So see the definition here. The bodies contain equal temperature if two bodies are in the contact. ये तो सही है. And then we see the first law. First law, what is exactly first law? Energy cannot be created nor be destroyed. So these are basically simple what first law definition. So now we'll see the second law definition. It is not possible in any engine, ऐसा कोई संभव नहीं है, which transfer heat from low temperature to high temperature without any work done. कहता है ऐसा कोई संभव ही नहीं है कि कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफर हो पाए बिना वर्क किए. So this is basically second law. And now we see the here two statement, that is first one is the Planck statement and second one is the first one is we'll see the Planck statement. What is exactly the Planck statement? So it is not possible to convert 100% heat into the work done. Some amount of heat must be lost. ये बोला there will be not possible the 100% of conversion of heat into work. Convert 100% heat into work without loss any type of heat. तो क्या होगा बेसिकली कुछ लॉस ऑफ हीट होगा, कन्वर्जन 100% नहीं होगा. अब हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, वो तो ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन होता है. इसमें हम देखेंगे अब एक होता है बॉयल्स लॉ. व्हाट एग्जैक्टली बॉयल्स लॉ? टेम्परेचर कांस्टेंट. एंड व्हाट इज चार्ल्स लॉ? प्रेशर कांस्टेंट. So then some thermodynamic process you will see here. So basically these are the word. Basically you can see point that keep in mind only the one word type of words here. So isochoric process, isobaric process. Isochoric process, what exactly here? Volume constant. Adiabatic process, there is no heat constant. It will be the constant. Isothermal temperature will be constant. Isobaric, that is pressure is constant. So there are basically four thermodynamic processes that you will see. The second one is the most important thing, what is exactly reversible and what is irreversible. Reversible, that is you can achieve the first class, that is what is practically this is not possible. Irreversible process, that is that one, that this one is the practically possible things. So you will see system and surrounding. You will see the system and what is exactly surrounding. System on which work done is completed. System surrounding anything apart from the system is the surrounding. And you will see the type of system, three type of system: closed system, open system, and isolated system. Then you will see the open system, both mass and heat will be transferred. And you will see the closed system, there will be the heat transfer possible but mass transfer will not possible. Mass and heat transfer in the open system. In closed system only heat transfer, mass will not be, energy will not be, mass will not be transferred. But in isolated system nothing will be transferred. कुछ दोनों में से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा यहाँ से. Work done and the efficiency of Otto cycle. You will see the petrol engine. Petrol engine derivation of the efficiency. You will see that why the same, the efficiency equal to what, that whatever with the energy given, whatever with the energy given to the cycle, and what is the energy output from the cycle. So output upon input is the efficiency. So in that auto cycle, you will see that process versus volume diagram, that you will see the first step, that is what in which you will see first adiabatic compression. The first step is adiabatic process. Adiabatic compression is there what exactly, that you will see there will be heat will be constant.
Heat will be Q equal to ms delta Q, heat will be constant. So is 1 and 2 process is adiabatic compression, and 2 and 3 step you will see that you will see what exactly a volume constant volume heat addition in the constant volume heat addition process. And third step you will see that adiabatic expansion is there. And fourth state is what volume constant but heat rejection is there, constant volume heat rejection is there. So you will see the network, what exactly network is heat addition and heat rejection. So actually you will see the supplied minus rejection, q supplied minus q rejection is that work done. So efficiency equal to work net upon QS. What exactly we are giving here input QS we are giving, and what work we are getting here, so QS minus QR. So what exactly the efficiency of a auto cycle, 1 minus QR upon QS. So during heat up, that you will see in the temperature form. So QS equal to you will heat supplied values. So MSCV high temperature T3 minus T2. So basically these are the terms that we will use here. And during the heat rejected, because that heat rejection and heat supplied, there are two process here. In step second and in step four, we are adding heat and we are what that the taking place of heat rejection. So QS equal to MS MCV T3 minus T2 bar, because the temperature T3 is more higher than the T2. So now QR equals to MCV T4 minus T1, because T4 what exactly here the heat rejection is taking place, that you will see that diagram in which what exactly that you will see that T4 is the higher temperature and T1 is the lower temperature. So so then putting these values, the UCV, you will see here MCV cancel, and then finally you will get 1 minus T4 minus T1 upon T3 minus T2. But there is also some case here that in adiabatic process that you will see that from the figure that one to process that you will see that volume of V1 V4 equal to and V2 V3 equal to. So V1 V4 or these are the basically volume. So you will see that in the adiabatic process, T2 upon T1, T2 upon T1 equal to T3 upon T4. So finally, you will see that the efficiency of Otto cycle 1 minus T1 upon T2. 1 minus T1 upon T2. Why? Because the T2 upon T1 equal to T3 upon T4. So you will see the diagram T2 upon T1, T2 upon T1, T4, T3, T4 upon T1, T4 T4 upon T1, these values are equal temperature. This value, sorry, T4 upon T1 equals to the ratio of this value will be same. So the final efficiency upon auto cycle 1 minus T1 upon T2. So exactly what is T2? T2 is, you will see the diagram, then you will find out that where exactly volume versus pressure versus volume diagram. T2 is here and T1 is here. So T2 upon T1, 1 minus T2 upon T1. Efficiency of that. So T2 upon T1, another name is R to the power gamma minus 1, and so efficiency of Otto cycle is equal to 1 minus R is the compression ratio. R equal to compression ratio 1 upon R to the power gamma minus 1 is the compression ratio. And T1 source temperature, T2 sink temperature, these are basically we are already discussed about that. So now part of IC engine. Basically in auto cycle in that the volume pressure volume diagram, and you will see that what exactly here. So now we will move to the different basically points of what IC engine. So first you will see that first one is the intake valve. Here the intake valve is it, and second one is the spark plug, exhaust valve. This one is the exhaust valve, basically exhaust valve, and cylinder. Water basically work as a coolant, and piston rings, piston, water jacket, camshaft, crankshaft, timing gears, flywheel. Flywheel basically store energy, kinetic energy, and what another kind of work here that you will see that motion control, speed. You can say the speed, the work of flywheel, connecting rod, crankshaft.
crankshaft, camshaft, and timing gears. So basically, these are the and crankshaft. What is this? Basically, this one is the what rotatory motion to that linear motion. So basically, movement change, motion direction of motion. So this one is intake valve, exhaust valve, TDC. Here the BDC. This one is the TDC to BDC. This volume is also called the this volume. I think this volume is called swept volume. TDC to BDC. And combustion chamber is there, piston is there, crank is there, crankshaft is there, cranking rod is there. So these are the basically points that we'll see in the in another slide. So first one is the cylinder block. Main structure housing cylinder pistons and cooling passage material cast iron or aluminum alloy for the strength and the heat dissipation. So basically, in that we see there the main structure housing cylinder, piston, and cooling passage material cast iron or aluminum alloy for the strength and heat dissipation. Cylinder head covers the cylinder block contains valve and that forms the combustion chamber. Basically, here that you will see what is important here that what which material that which material basically we are making here. So from which material. तो जैसे कि सिलेंडर हेड है ये किस मटेरियल से बना है पिस्टन किस मटेरियल से होगा पिस्टन रिंग किस मटेरियल का होगा कनेक्टिंग रॉड किस मटेरियल का होगा बेसिकली दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर और इसका क्या काम है ये कहाँ पे रहता है जैसे किसको कनेक्ट करता है क्या करता है बस बेसिकली इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट so in that you will say cover the cylinder block contains the valve and the form the combustion chamber ये cylinder head combustion chamber का form करता है cast iron aluminum और heat resistant aluminum cast iron से बना रहता है cast iron और aluminum ठीक है एल्युमिनियम में कास्ट आयरन का ये बना रहता है फॉर द हीट रेजिस्टेंस पिस्टन है ट्रांसफर कंबसन फोर्स टू द कनेक्टिंग रॉड पिस्टन का काम क्या होता है ट्रांसफर कंबसन अब पिस्टन को देख लेते हैं मटेरियल क्या है एल्युमिनियम एलॉय का बना रहता है फॉर लाइट वेट होता है एंड गुड थर्मल कंडक्टिविटी रहता है पिस्टन का ट्रांसफर कंबसन फोर्स टू द कनेक्टिंग रॉड हम देखते हैं पिस्टन वेयर इज द पिस्टन हियर पिस्टन इज हियर पिस्टन का क्या काम है पिस्टन का काम है ट्रांसफर कर देता है भाई क्या चीज का ट्रांसफर करता है पिस्टन ट्रांसफर कंबशन फोर्स टू द कनेक्टिंग रॉड को फोर्स प्रोवाइड करता बना रहता है एल्युमिनियम मटेरियल का लाइट वेट के लिए थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए पिस्टन रिंग सील द कंबशन चेंबर पिस्टन रिंग का काम होता है कंबशन चेंबर को पैक करता है और कंट्रोल ऑयल एंड ट्रांसफर हीट ऑयल का कंट्रोल ऑयल जो उसको एंड द मटेरियल के हाई स्ट्रेंथ कास्ट आयरन का बना रहता है पिस्टन रिंग किससे बना रहता है कास्ट आयरन का कौन सी बना रहता है पिस्टन रिंग piston ring you will see the piston ring somewhere we will see the piston ring piston gauge pin piston ring cylinder and here the mention here not mention that word piston ring TDC BDC exhaust timing ball can piston rings here the piston rings this one is the basically on that cylinder on the cylinder there the what you will see that piston ring. This is the cylinder hole and this one is the piston. And on the piston there is a ring marked there in the piston ring. So basically this material is the cast iron and work of this material is what prevent. What they prevent? So we'll see here. Piston ring seal the combustion chamber, control oil and transfer heat. Material high strength cast iron और alloys. क्या होता है कि ये combustion chamber को क्या करता है सील करता है कंट्रोल ऑयल एंड हीट ट्रांसफर को ये रोकता है ये रिंग कनेक्टिंग नोड का काम देखते हैं कनेक्ट पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट कनेक्टिंग नोड का क्या काम है कनेक्ट करता है किसको कनेक्ट करता है पिस्टन को किससे क्रैंकशाफ्ट से एंड ट्रांसफर मोशन को भी ट्रांसफर करता है बस इसका मोशन उससे ट्रांसफर करता है मटेरियल क्या होता है फोर्ज स्टील और ड्यूरेबिलिटी क्या होता है फोर्ज स्टील और ड्यूरेबिलिटी ये विल सी द फोर्ज स्टील और ड्यूरेबिलिटी सो नाउ वी मूव टू द अनदर क्रैंकशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट का क्या काम है कन्वर्ट लीनियर मोशन वही तो क्रैंकशाफ्ट का काम ही होता है कन्वर्ट लीनियर पिस्टन मोशन टू द रोटेटरी मोशन कन्वर्ट लीनियर पिस्टन मोशन जो लीनियर मोशन उसको रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करने का काम होता है इसका भी फोर्ज स्टील कास्ट आयरन और स्ट्रेंथ होता है ये फोर्ज आयरन से स्टील होता है बट ड्यूरेबिलिटी ये स्ट्रेंथ होता है कनेक्टिंग और ड्यूरेबिलिटी में होता है ये स्ट्रेंथ में होता है कौन क्रैंकशाफ्ट में उसके बाद आता है कैमशाफ्ट कंट्रोल द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ वाल्व कैमशाफ्ट का क्या मतलब है द कैमशाफ्ट
क्रैंक शाफ्ट तो जान रहे हो कि भाई ये मोशन को ये करता है, लीनियर को रोटेटरी में करता है। कैम शाफ्ट क्या करता है? कैम शाफ्ट का वाल्व टाइमिंग ओपनिंग का काम करता है। कैम शाफ्ट, वेयर इज द कैम शाफ्ट? You will see the crank shaft. There is the crank shaft. What is that? Where the crank? This one is the crank, and this one is the crank shaft. Here the crank shaft. These are basically motion. Here the crank pin. So basically motion from the linear motion to the rotatory motion. That the work. But here the some what the cam shaft. What exactly the cam shaft? Cam shaft that control valve timing. Where the cam shaft? Where the not crank cam shaft. Here the cam shaft is the what basically valve timing upon. So KEMSA, the control the opening closing of valve. Control the opening closing of valve. Material cast iron or alloy steel for the wear resistance valve. The cast iron or alloy steel for wear resistance valve. Regular air fuel intake and exhaust gases. Material heat resistant steel alloy. किससे बना था? Heat resistant steel alloy से बना था. Basically made of steel alloy. So in that you will say what material basically use crankshaft. Basically question are coming from this section. Which material? Crankshaft. Crankshaft is the forged iron. And why the connecting rod? But the connect shaft, crankshaft is the connecting forged steel, but the difference, the strength is higher. Strength will be higher. Connecting rod is the forged material, but their strength will be a little bit low. So flywheel, in that you will see the flywheel stored rotational energy and ensure the smooth operation. Material cast iron or steel. Basically, you will see the flywheel. Flywheel will we can made as a cast from cast iron. So connecting rod is the forged material. Crankshaft is the forged material. Camshaft is the steel, heat resistant steel, and so basically these are the material. So basically flywheel is the cast iron. Flywheel किससे बना रहेगा? Cast iron से रहेगा. So basically we can say find out the list of the name here that we are using. So first one is that we will see here the material. So not only the point that what is the basically point wheel. Flywheel is a flywheel. You will see that it for the kinetic energy, but also you will see the material of cast iron. Iron, cast iron steel. There the stem or steel or steel. So there the chance that cast iron and steel. So basically for the flywheel. But you will see the camshaft you will see the camshaft. So what exactly here the camshaft? Control the opening closing of valve. Material cast iron. Also the cast iron material. Camshaft is the cast iron material. Cast iron material. Alloy steel wear resistance. ठीक है. Regulate air fuel intake and exhaust gases. There the camshaft is the work that regulate the air fuel mixture. Intake air fuel intake and exhaust gases. Material heat resistant steel. Heat resistant heat heat resistance. So basically there is a another kind of thing that the crankshaft, forged steel or cast iron for the strength. But the crankshaft. What exactly that crankshaft? Crankshaft. So you will see that crankshaft is the material basically that linear motion to the rotatory motion, and the material is forged steel with the strength. Forged steel, forged steel, forged steel, steel with strength. With strength material से made होता है. Connecting rod basically the forged steel. Connecting rod ये भी forged steel है, ये भी forged steel है, but there is a difference. What exactly difference? है durability is there. Durability is there. Some durability is there. So piston rings, high strength cast iron alloy steel. Piston rings, piston high strength cast iron, high strength cast iron. Piston high strength cast iron. And you will see the piston. Basically piston you will see that aluminum because lightweight at a good thermal conductivity. Aluminium alloy. So these are the basically material that you will see. The first one that we have already discussed about what exactly the IC engine, and after the IC engine, actually what is the
engine, and after that IC engine, and after the IC engine there are four processes there: intake and compress, and another the power store, and the third one is the fourth one is the exhaust. And after that we are looking here the diesel engine and petrol engine, and in that petrol engine we have discussed on that PV diagram. In that PV diagram, that first PV diagram, the first one is that you will see that with step 1 to 2 there the word adiabatic compression, and in the uh, adiabatic compression is there, and second step is that constant volume heat addition, you can supplied it here, and the third one is the adiabatic expansion, and fourth one is the what constant volume heat rejection. So we will here that is define the efficiency of the auto cycle, that you will find out that heat supplied, what exactly heat supplied, and the difference of heat supplied to heat rejection, heat rejection minus heat supplied minus heat rejection upon heat supplied, qs minus qr upon qf. So finally we are getting here what 1 minus t2 upon t1. Why this will be happen? Because that one we will see that t4 upon t1 equal to t3 upon t2. Why? Because this one is the adiabatic process, and finally we are getting the efficiency of the auto cycle equal to 1 minus 1 upon compression ratio to the power gamma minus 1. And what exactly gamma? Gamma is the temperature ratio is there. So these are the basically we are discussing, and some what exactly material basically what IC engine in the part of the IC engine and material basically are made. So now we are looking into that fuel injector last. Fuel injector or spark plug. Fuel injector CI engines automize the or atomize the fuel into the combustion chamber. What fuel injector का काम करता है? वो फ्यूल को क्या करता है? एटोमाइज कर देता है एक कंबशन चेम्बर में. अब आता है स्पार्क प्लग. बेसिकली फ्यूल इंजेक्टर जो होता है, फ्यूल इंजेक्टर सीआई इंजन का पार्ट होता है. फ्यूल इंजेक्टर का स्पार्क प्लग होता है एसआई इंजन होता है. स्पार्क इग्निशन से होता है, कंप्रेशन इग्निशन से होता है, कंप्रेस्ड गैस से होता है, जो कि हम बात करते हैं डीजल इंजन पे बात करते हैं. स्पार्क प्लग जो बात करते हैं वो इसमें क्या रहता है? स्पार्क प्लग रहता है और वो इग्नाइट होता है. इग्नाइट द एयर फिल मिक्सचर, इसमें कार्बोरेटर यूज होता है. मटेरियल स्टेनलेस स्टील होता है, सिरामिक एंड निकल एलॉय होता है स्पार्क प्लग. इंजेक्टर क्या यूज होता है? इंजेक्टर जो यूज होता है वो होता है स्टेनलेस स्टील का. स्पार्क प्लग जो होता है वो स्पार्क प्लग जो होता है निकल एलॉय होता है. निकल एलॉय, निकल निकल एलॉय, निकल एलॉय का स्पार्क प्लग होता है. और स्टेनलेस स्टील का, स्टेनलेस स्टील का होता है इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर होता है. सो एग्जॉस्ट एंड इनटेक मैनिफोल्ड. इनटेक मैनिफोल्ड डायरेक्ट एयर फ्यूल मिक्सर टू सिलेंडर्स. एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड रिमूव एग्जॉस्ट गैस. अब एक चीज होता है एग्जॉस्ट एंड इनटेक मैनिफोल्ड. तो एग्जॉस्ट का क्या होता है? इनटेक मैनिफोल्ड डायरेक्ट एयर फ्यूल मिक्सर टू सिलेंडर हिलाता है, एग्जॉस्ट का बाहर कर देता है. मटेरियल होता है दोनों का एल्युमिनियम, इनटेक वाला एल्युमिनियम का होता है, एग्जॉस्ट वाला कास्ट आयरन का होता है. intake what material we are using here? So aluminum, aluminum material, aluminum. And what here what we will use here for that exhaust? Cast iron. Exhaust के लिए we are using here the cast iron, cast iron. Bearing we are using here. Why? Because the reduce the friction between the moving parts like the crankshaft and the connecting rod. Material by metallic alloys for the strength and low friction. Engine mounting. अब होता है engine में support the engine and absorb the vibration. Shock जिसको बोलता है vibrate जो करता है. Material steel and rubber. हाँ तो rubber ही रहेगा ना भाई, absorb करेगा तो. So you can also purchase from this IC engine ebook payment of this. I think this number, and this one is the teacher of the actually he made this PPT.
Classification of IC engine. Basically, what type of IC engine here? So based on the ignition system, there are the two. अब जलने के आधार पर बात करेंगे कैसे इसमें इग्निशन होगा, इग्नाइट कैसे होगा, तो उस पर दो होता है। पहला स्पार्क इग्निशन होता है जो, और एक कंप्रेशन इग्निशन होता है। डीजल और पेट्रोल की बात तो हम कर ही लेते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक किस तरह का होता है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक होता है, इसमें भी दो होता है। अकॉर्डिंग टू फ्यूल यूज, इसमें भी दो होता है, पेट्रोल डीजल। अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात करें तो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल होता है। ये चलो ठीक है। पहला क्या था, बेस्ड ऑन द इग्निशन सिस्टम, तो एक होता है सीआई, एक एसआई होता है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। अकॉर्डिंग टू द फ्यूल, उसमें भी 2 होता है, डीजल पेट्रोल। अब साइकिल पर बेस करें तो ऑटो, डीजल और डुअल। So basically, we are looking here the 2 stroke or 4 stroke. What are the basically difference in that the 2 stroke and 4 stroke? So in 4 stroke engine, so number of major moving parts 9 and 2 stroke में major moving part is 3. Power stroke जो था, one every 2 revolution of the camshaft cooling cooler running. कहता power stroke क्या होता है? कहता one every revolution of camshaft hotter running. Running temperature, रनिंग टेम्परेचर या कूलिंग रनिंग, कूलर रनिंग, हॉटर रनिंग। कह रहा है कि पावर स्ट्रोक के तब एवरी 2 रिवॉल्यूशन ऑफ कैंसर। देखो, अगर 4 स्ट्रोक की बात करें तो 2 रिवॉल्यूशन होगा तो एक पावर स्ट्रोक हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, 2 स्ट्रोक में एक बार घूमेगा वो पावर स्ट्रोक दे देगा। लेकिन किसका घूमना, क्रैंक शाफ्ट का। उसके बाद रनिंग टेम्परेचर क्या होगा, 4 स्ट्रोक थोड़ा कूलर रनिंग होता है, ये हॉटर रनिंग होता है 2 स्ट्रोक वाला। और ओवरऑल इंजन साइज क्या होता है, लार्जर होता है। ये तो होगा ही ना भाई, 4 स्ट्रोक है तो ज्यादा स्ट्रोक सिलेंडर चाहिए हमको, तो ज्यादा वो तो लार्जर हो ही जाएगा। इंजन वेट क्या होगा, ये तो पता ही है, हैवी होगा भाई, क्यों नहीं होगा, 4 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक वाला है, सिलेंडर ज्यादा है तो। बोर साइज इक्वल टू द लार्जर, ये तो भी वही बात है। फ्यूल एंड ऑयल, नो मिक्सचर रिक्वायर्ड, मस्ट बी प्री मिक्स। कह रहा है कि नो मिक्सचर रिक्वायर्ड, इसमें मिक्सचर आना जरूरी नहीं है फ्यूल और ऑयल का, बट इसमें मिक्स होना चाहिए। फ्यूल कंजप्शन है फीवर गैलन पर आवर, कुछ गैलन ही होता, बट इसमें क्या होता, मोर गैलन होता है 2 स्ट्रोक में। ऑयल कंजप्शन रिसाइकुलेट एंड द स्टे इंजन, इसमें कितना ऑयल जो रिसाइकुलेट होता है फिर इंजन में ही रहता है, लेकिन ये बर्न होकर खत्म हो जाता है। साउंड है जनरली क्वाइट, मतलब थोड़ा शांति होता है, ये थोड़ा हल्का करता है, ये थोड़ा हल्का स्मूथर होता है। तो बेसिकली दीज आर द पॉइंट, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट मिलने का नहीं, इम्पोर्टेंट यही है कि इसमें एक रोटेशन करता है हमको पावर स्ट्रोक मिल जाता है। मतलब एक स्ट्रोक, एक बार क्रैंक शाफ्ट का घूमना, और इसमें 2 बार घूमना, बस ये इम्पोर्टेंट है। और कुछ ज्यादा खास इसमें नहीं। भारी होगा, ये होगा, वो तो होगा ही भाई। दूसरा बात, चलते हैं एस आई सी आई। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो थोड़ा कुछ अलग चीजें हो। जैसे कि हम अगर एस आई इंजन में हमको क्या चाहिए, स्पार्क प्लग चाहिए, तो यहाँ पे हमको चाहिए एयर फ्यूल दोनों साथ में आए और जले। बट सी आई इंजन में ऐसा कुछ नहीं है, कंप्रेस करेंगे, एयर को कंप्रेस करेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो एयर हमको चाहिए, यहाँ पे एयर आएगा, वहां तो रहेगा ही सी आई इंजन में। ये कंप्रेशन इग्निशन वाला है, इसमें स्पार्क प्लग चाहिए, इसमें कंप्रेस एयर एंड फ्यूल चाहिए बस। ये होमोजेनियस मिक्सचर को चलेगा, इसमें कोई होमोजेनियस नहीं, हेटेरोजेनियस है, डीजल वाला कहानी चलेगा। टोटल एयर फ्यूल मिक्सचर होगा, एयर एंड अनथ्रोटल फ्यूल कंट्रोल होगा। इसका इक्विवेलेंस रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जॉस्ट टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्रेशन रेशियो इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट है। 7 से 14 जाता है, 15 से 21, मतलब इसका जहाँ खत्म होता है उसका वहाँ उसका आगे ही स्टार्ट हो जाता है। तो कंप्रेशन रेशियो सीआई में लेस एज कंपेयर टू दैट व्हाट, एज कंपेयर टू द सीआई इंजन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब है basically in CI engine we will see that 51 pages here. So now we are in 17 pages. So we will today we will complete the 30 page, and tomorrow we will another 31 page we will discuss, and total we have to discuss here 132 pages. So internal combustion engine, an engine where the combustion of fuel occurs inside the engine cylinder produces power. बिल्कुल सही बात है भाई। वही तो है इंटरनल कम्बशन इंजन का, सारा काम अंदर में होगा, एनर्जी दे दिया, और जो भी मैकेनिकल एनर्जी हमको मिलना चाहिए मिल भी गया भाई, यही तो चाहिए। और सारा काम कहाँ होगा, इनसाइड द सिलेंडर होगा। स्ट्रोक क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अनदर, ये भी सही बात है। इनटेक स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। इनटेक मतलब हम ले लिए भाई, एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर द सिलेंडर। कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होगा, मिक्सचर कंप्रेस बिफोर इग्निशन, अभी आग लगा नहीं है, इग्नाइट हुआ नहीं है, लेकिन अभी हम क्या किया, कंप्रेस किए। पावर स्ट्रोक क्या, जल गया,
और पिस्टन अप डाउन जाएगा, पुशिंग द पिस्टन डाउन। और उसके बाद क्या होगा लास्ट में, जो जला हुआ चीज है वो निकलेगा एग्जॉस्ट के रूप में, बर्न गैसेस। अब यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज बोर, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। इसमें तो कुछ बात नहीं है, पिस्टन जहाँ से मूव करता है ऊपर से नीचे तो जो डायमीटर में मूव कर रहा है, जो मतलब जिस डायमीटर में, उसी को कहते हैं bore। स्ट्रोक लेंथ किसको बोलते हैं, द डिस्टेंस टेबल बाय द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। बीडीसी से टीडीसी जो लेंथ वो ट्रेवल करेगा पिस्टन, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रोक लेंथ। टॉप डेड सेंटर क्या होता है, द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन इन द सिलेंडर, बात सही है। बॉटम डेड सेंटर को बीडीसी करते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ द कंबशन चेंबर व्हेन द पिस्टन इज एट टॉप एट द टीडीसी, मतलब जब पिस्टन तुम्हारा टॉप में है और उसके बाद जो वॉल्यूम तुम्हारा कंबशन चेंबर का बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, बीसी। उसके बाद एक होता है वर्ड, ये चीज थोड़ा अच्छा है, सिलेंडर ये होता है स्वेप्ट वॉल्यूम। व्हाट एग्जैक्टली द स्वेप्ट वॉल्यूम, तो स्वेप्ट वॉल्यूम आसान है, द वॉल्यूम डिस्प्लेड बाय द पिस्टन एट इट्स मूव फ्रॉम टीडीसी। जो वॉल्यूम पिस्टन जितना मूव करेगा वही स्वेप्ट वॉल्यूम है। कैसे निकालेंगे, तो वही हुआ सिलेंडर का निकाल देना वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच होता है बस। पूरा लंबाई एल है, डी डायमीटर है, बस निकल गया। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेस द रेशियो ऑफ द टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। वही बात है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, वीसी। क्लियरेंस वॉल्यूम कब आता है भाई, क्लियरेंस वॉल्यूम कब आता है, टोटल वॉल्यूम तो समझ में आ रहा है, बीएस बीएस में तो स्क्वायर वॉल्यूम जब टीडीसी पे रहेगा जो वॉल्यूम होगा वो तो स्क्वायर वॉल्यूम होगा ना, टोटल वॉल्यूम डिस्प्ले का टीडीसी में टीडीसी, ये तो स्क्वायर वॉल्यूम होगा। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है भाई, क्लियरेंस वॉल्यूम देख लो, कहता था वॉल्यूम ऑफ द कंबशन चेंबर व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी, जब टीडीसी टॉप डेड सेंटर पे होगा तब जो वॉल्यूम होगा उसको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। जो वहां पे हम काम हो रहा है ये तो क्लियरेंस है ना, बॉटम डेड सेंटर, उसके बाद और कुछ नहीं है। तो चलो ये क्या है, वीसी हो गया। उसके बाद वीसी का क्या होगा, वीसी और वीएच। वीएच क्या है, स्क्वायर वॉल्यूम क्या है, जो मूव कर गया यहाँ से वहां तक जो मूव किया है पूरा क्या है, वीसी है, वीएस है। और वीसी क्या है, जो पिस्टन जब ऊपर में रहता है नीचे जो वॉल्यूम छोड़ रहा है जहाँ पे एक्चुअली काम होगा उसको क्या कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम अपन क्लियरेंस वॉल्यूम को कंप्रेशन रेशियो कहा जाता है। एयर फ्यूल रेशियो को क्या बोला जाता है, द एयर ऑफ फ्यूल मिक्सचर ऑफ मास इन द मिक्सचर, आइसोमेट्रिक स्टैक्योमेट्रिक रेशियो होता है। आइडियल रेशियो ऑफ कंप्लीट कंबशन 14.7 एक होता है, पर पेट्रोल होता है, डीजल के भी इसी तरह अलग होगा, 14.7 एक होता है। रिच मिक्सचर मोर फ्यूल लेस एयर, ये तो जानता है रिच मिक्सचर क्या होगा, इसमें फ्यूल ज्यादा होगा। लेस मिक्सचर किसमें होगा, जिसमें एयर ज्यादा होगा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मीन इफेक्टिव प्रेशर एक वर्ड होता है, डिफाइन करते हैं हम लोग, द एवरेज प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर दैट वुड प्रोड्यूस द सेम वर्क आउटपुट एट द एक्चुअल साइकिल। मतलब मीन इफेक्टिव प्रेशर एक प्रेशर होता है जो कि सेम आउटपुट मिलेगा एक्चुअल साइकिल में बात करें। अब एक होता है इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और फ्रिक्शन पावर। फ्रिक्शन पावर कुछ नहीं होता है, इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर का माइनस होता है। इंडिकेटेड पावर है वो पावर है जो एक्चुअली ठीक है, द टोटल पावर डिलीवर्ड इनसाइड द इंजन सिलेंडर फार्मूला होता है, वो इंडिकेटेड पावर होता है। और ब्रेक पावर जो होता है एक्चुअल पावर अवेलेबल एट द इंजन सेट आफ्टर द फ्रिक्शनल लॉस। लॉस के बाद जो मेरे पास पावर है ना उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक पावर। इंडिकेटेड पावर एक पावर है, बस मान लेते हैं जंक्शन कि भाई ये मेरा इतना है, लेकिन एक्चुअली वो बस टोटल पावर डेवलप इनसाइड द सिलेंडर। लेकिन यहाँ लॉस होगा तो ब्रेक पावर होगा, और वो दोनों का माइनस करेंगे तो हमको निकल जाएगा फ्रिक्शन पावर कितना निकला, लॉस होगा। मतलब एक्चुअल पावर है आईपी, इंडिकेटेड पावर है, इसी का मेन काम होगा। और ब्रेक पावर जो माइनस करेंगे तो हमको लॉस तो पता आ जाएगा कितना मेरा इंजन में लॉस हो गया फ्रिक्शन की वजह से। तो मैकेनिकल इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, जितना हमको मिला ब्रेक पावर हमको मिल रहा है, ब्रेक पावर का फॉर्मूला याद करना, दिस इज इम्पोर्टेंट, 2 पाई एन टी बाई 60, 2 पाई एन टी बाई 2 पाई एन टी। एन क्या है, अरे वो रिवोल्यूशन वाला, टी मतलब टाइम वाला फैक्टर है, और 60 तो चलो ठीक है। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है, बीपी अपन आईपी हो गया इंटू 100 हो गया भाई, ये तो ठीक है। बीपी क्या है, हमको मिल रहा है इतना एनर्जी, हम दे रहे हैं आईपी, और हमें 100 से मल्टीप्लाई करना परसेंटेज के लिए। थर्मल एफिशिएंसी क्या है, वर्क आउटपुट अपन हीट इनपुट, वही सी बात है, कितना हमको थर्मल एफिशिएंसी क्या होगा, जो हमको वर्क मिला और जो हमने हीट दिया उसका रेशियो होगा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक वर्ड होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इसको थोड़ा देख लेना भाई। एक्चुअल एयर इनटेक और थ्योरेटिकल एयर इनटेक, मतलब एक्चुअल एयर इनटेक कितना हो रहा, होना कितना चाहिए था, मतलब मेरा इतना हो रहा लेकिन हो रहा होना इतना चाहिए था, उसी को रेशियो कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। और स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या हुआ, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, छोड़ दे सकते हैं। उसके बाद नोकिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट एग्जैक्टली नोकिंग इज देयर एंड उसको कैसे कम कर सकते हैं। द फिनोमेनन वेयर अनकंट्रोल्ड कंबशन कॉज द हायर प्रेशर वेव्स लीडिंग टू द इंजन डैमेज। नॉकिंग की वजह से इंजन डैमेज होता है, और ये अनकंट्रोल कंबशन कॉज द हायर प्रेशर वेव। सुपर चार्जिंग क्या होता है, फोर्सिंग मोर एयर इनटू द इंजन सिलेंडर यूजिंग द कंप्रेसर
टू इंक्रीज द पावर आउटपुट। हम ज्यादा उसमें एयर डालते हैं, कम जा रहा है फिर भी बहुत ज्यादा लगा दिए, सुपर चार्जिंग लगा दिए, ज्यादा वो जा रहा है एयर, ताकि मेरा क्या हो जाएगा, वो इंजन को आउटपुट पावर ज्यादा मिल पाए। Turbocharging क्या था? Using exhaust gases to drive a turbine that compressor intake air, improving the efficiency and power. They are using exhaust, using the exhaust gas to drive a turbine and that compresses intake air. Turbocharging हम लोग लगाते हैं, improving the efficiency and power. कहते हैं using extra exhaust gas, using exhaust gases to drive a turbine. एग्जॉस्ट गैस को हम यूज करेंगे और टरबाइन को चलाएंगे और एयर जो इनटेक है उसको कंप्रेस करेगा और उसके कारण से क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। मतलब कुछ नहीं है, टर्बो चार्जिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड है और सुपर चार्जिंग जो पावर आउटपुट से रिलेटेड है। एक वर्ड होता है स्क्वेंजिंग, क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूव द बर्न एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी। ये भी वही है, बर्न गैसेस को बाहर निकालना है। टू स्ट्रोक इंजन में होता है और उसको एफिशिएंसी इंप्रूव करना है। लुब्रिकेशन तो जान ही रहा भाई, लुब्रिकेशन क्यों करते हैं भाई? सिस्टम को फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, टियर गियर को रोकने के लिए। स्प्लैश लुब्रिकेशन होता है, प्रेशर लुब्रिकेशन होता है, मिस्ट लुब्रिकेशन होता है, टाइप ऑफ लुब्रिकेशन होता है, दीज आर नॉट बेसिकली मोर इंपॉर्टेंट इज कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं, रिमूव द एक्सेस हीट फ्रॉम द इंजन टू प्रिवेंट द ओवर हीटिंग। एयर कूलिंग यूजेज एयर फ्लू बाइक, वाटर कूलिंग यूजेज द रेडिएटर एंड कूलेंट। देखो कार्स में हम लोग वाटर कूलिंग यूज करते हैं, एयर कूलिंग यूजेज एयर फ्लू, बाइक्स में हम एयर कूलिंग यूज करते हैं, जो चीज वगैरह की बात करते हैं। एयर कूलिंग में क्या होगा, फिंस होगा। रेडिएटर में हम लोग क्या करते हैं, वाटर कूलिंग करते हैं, जो गाड़ी वगैरह में आता है, जो गाड़ी में वाटर डालते हैं। रिमूव एक्सेस हीट फ्रॉम द इंजन टू प्रिवेंट द ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग से बचने के लिए हम ऐसा कुछ करते हैं। उसका गवर्निंग ऑफ एक्शन, गवर्निंग का क्या काम होता है? वो तो रेगुलेशन ऑफ इंजन स्पीड को करता है और आउटपुट। टोटल गवर्निंग होता है, हीट एंड मिस गवर्निंग होता है, क्वालिटी गवर्निंग होती है। ये चीज बेसिकली अब होता है कि टोटल गवर्निंग कहाँ होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। हीट एंड मिस गवर्निंग कहाँ होता है? सिंगल सिलेंडर इंजन में होता है। और क्वालिटी गवर्निंग कहाँ होता है? डीजल इंजन। तो क्वालिटी की बात करें तो डीजल में चल जाएंगे, टोटल करेंगे तो पेट्रोल में करेंगे, दूसरा बात है सिंगल सिलेंडर में चल जाएंगे। अब होता है परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ आईसी, वही है, ब्रेक पावर है, इंटीग्रेटेड पावर है, फ्रिक्शन पावर है, थर्मल एफिशिएंसी है, इंटीग्रेटेड पावर थर्मल एफिशिएंसी है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी, ब्रेक एफिशिएंसी और इंटीग्रेटेड पावर। बेसिकली वी विल सी हियर द सम व्हाट पॉइंट्स हियर, बेसिकली इन द टर्म्स ऑफ फार्मूला वाइज में बात करेंगे। तो पहले देखो भाई, ये तो फार्मूला याद रहना ही चाहिए। ब्रेक पावर का तो जानता ही है, 2.60, और तो कुछ याद नहीं करना है। फ्रिक्शन पावर तो दोनों का माइनस कर देंगे, इंडिकेटर पावर माइनस ब्रेक पावर, कहानी खत्म हो गया, और तो कुछ इसमें याद नहीं करना है। उसके बाद है रिलेटिव एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, कोई नहीं देखना है, ये तो फालतू ही चीज लग रहा है। अब आता है वाल्व टाइम, ये इंपॉर्टेंट सेक्टर में से एक होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बोला जाता है कि कुछ एंगल ये नहीं है, वाल्व टाइम एंगल ये नहीं है, तो कौन सा है? कहता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इंटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व को बताता है, पोजीशन ऑफ पिस्टन का बताता है ड्यूरिंग द फोर स्ट्रोक ऑफ आईसी इंजन साइकिल, इट एंश्योर द प्रॉपर कंबशन एंड एफिशिएंट इंजन ऑपरेशन। वाल्व टाइम ये बताता है, इंजन का ऑपरेशन का बताता है, पिस्टन का पोजीशन बताता है, पोजीशन ऑफ पिस्टन का ड्यूरिंग दिस। पहला होता है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इंटेक वाल्व्स ओपन एंड एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर द सिलेंडर, ये तो सब जानता है, बोथ वाल्व्स आर ओपन। देखो, जब सक्शन स्ट्रोक होगा तो इनटेक वाल्व ही ओपन होगा ना, जाने जिसको आना है उसी में आना, वो आना है इनटेक में ही करना है ना, वहां से क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर करेगा, वहां तो एक ही खुला है, चलो ठीक है। दूसरा में क्या होगा, कंप्रेशन जब होगा, बोथ वाल्व्स आर ओपन, वहां दोनों वाल्व ओपन होगा एंड द एयर फ्यूल मिक्सचर इज कंप्रेस, वहां से दोनों वाल्व ओपन होगा और कंप्रेस होगा, नहीं सॉरी, दोनों क्लोज ना होगा, ओपन होगा तो बाहर हो जाएगा, कहानी खत्म है ना, वहां नहीं होगा, कंप्रेस होगा और दोनों क्लोज होगा। पावर स्ट्रोक में स्पार्क इग्नाइट द मिक्सचर एंड द एक्सपेंडिंग गैसेस पुश द पिस्टन अप, पिस्टन डाउन पुश करेगा, ठीक है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, एक बॉल खोलेगा, कौन बॉल खुलेगा भाई, जो एग्जॉस्ट में है वो बॉल खुलेगा और वहां से क्या होगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वॉल टाइमिंग डायग्राम फॉर फोर स्ट्रोक इंजन, ये फोर स्ट्रोक इंजन है। यहाँ देखना एक चीज है, the wall time diagram is slightly different from the theoretical timing due to the practical design needs like achieving efficient scavenging। वही scavenging है, efficiency को बढ़ाने के लिए टू स्ट्रोक में होता है and ensuring the complete combustion। वॉल टाइमिंग डायग्राम टू स्ट्रोक डीजल इंजन, ये डीजल इंजन है टू स्ट्रोक में। अब देखते हैं, बात करते हैं क्या है कहानी। टीडीसी है, बीडीसी है,
इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कि कौन सा डिग्री नहीं होता वॉल टाइमिंग डायग्राम का, कुछ देख लेते इसके बारे में नोट में। कहता है की इवेंट ऑन वॉल टाइमिंग डायग्राम। आज यही रहने देते हैं, कल इसके आगे देखेंगे। वॉल टाइमिंग डायग्राम